Hello everyone. So welcome to the session. And as you know, we have started a initiative to complete all the syllabus at free of cost. Okay, and this is a part of the series of 100% CAT syllabus, 100% free. So in this session, like if you are already there in our LRDI and VARC part, so you have seen our course. Like we are delivering all the things which are related to CAT. And यहाँ पे अब देखो ये जो सीरीज है इसमें आई विल ट्राई टू कीप दोज अ कैड पार्ट ओके कॉन्ट पार्ट सो इफ यू आर देयर विथ मी इन DILR तो यू नो हाउ आई एम गोइंग टू टीच तो अगर पसंद आता हो तो यू कैन कंटिन्यू अगर मुझसे बेटर किसी से आपको समझ में आ रहा है तो आई वुड रिकमेंड टू कंटिन्यू विद देम ओके सो एज यू नो सबसे पहली बात तो सी दिस you know I was the same person in some time like few year ago and I was like what is this algebra ये क्या है ओके एंड यही मेरा हाल था कि मैं क्वेश्चन देख के मैं गुल हो जाते थे मेरे हवा तोते उड़ जाते थे बट by practicing the thing I have got a good interest in algebra and it was my strongest part in the QA section. That's why this in this series I'm going to take a algebra part from this section. Also जो अरिथमेटिक है एंड बाकी के जो सेक्शंस है वो आपके लाइक सक्षम सर है जो वो कवर करेंगे एंड आई एम ओनली गोइंग टू टेक अ QA लाइक अलजेब्रा पार्ट बिकॉज ये मेरा यू कैन से लाइक कहते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हैंड दिस इज माई स्ट्रॉन्ग हैंड एंड definitely I would bet I will teach you in a way like if you are fear of algebra you will definitely it will get clear in a day not in a day like 15 दिन तो लगेगा ज़्यादा बोल दिया मैंने in a day okay 10-15 दिन लगेगा when you are with me in a sessions and I will bet कि अगर आप मेरे से कर लोगे ना you can easily solve 5 to 6 question from algebra. See why 5 to 6? Why not all? You can solve all, but 5 to 6 इसलिए मैं कह रहा हूँ. The reason behind there are some very tough question in a CAT, and you can't just waste your time by solving those questions. So I highly recommend if you know the question is easy, you are able to solve it. Go ahead and trust me. बहुत से लोग मैंने देखा है बहुत से groups में in our groups also like we have 3 to 4 groups and in each group people ask the same question कि algebra this is the weakest part of them जबकि मुझे लगता है ये strong होना चाहिए सबका दो देयर आर सम नॉन इंजीनियर जिन्होंने कभी देखा नहीं हो तो उनका इशू हो सकता है बट इंजीनियर्स का भी ये कभी कभी वीकेस्ट पार्ट रहता है बट स्टिल नो वरीज यू कैन कंटिन्यू विद मी एंड आई विल बेट अगर आप मेरा सीरीज ये मतलब पूरा अलजेब्रा कोर्स अच्छे से कर लोगे तो वो डाउट नहीं रहेगा एंड यू आर एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस okay so is here someone just say there are like in the last session there was a people who has a language barrier that's why I have to continue the session in English so are you comfortable in Hindi or do I continue with English or let it be let's take it in English so that if the people from English background they could also understood what the actual session is going and what they are saying okay तो अब बात करते हैं what is the agenda of this session आज अगर ये सेशन ले रहे हैं तो इसमें करना क्या है तो अब आए हो भाई इतना टाइम निकाल के थैंक यू फर्स्ट टू गिव योर टाइम हियर एंड कमिंग टू द सेशन बट टू बी ऑनेस्ट आज मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ हाँ 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 तो बोलेंगे ये सेशन क्यों लिया है पागल है क्या आज कुछ नहीं पढ़ा रहा फिर भी सेशन ले रहा सो द सेशन द मोटिव ऑफ द सेशन इज टू नो व्हाट एग्जैक्टली अलजेब्रा इज that is why I have written here intro to the algebra so you can leave the session if you know already about the algebra if you don't know you can continue will I bet जो भी आप टाइम दे रहे हैं यहाँ पे स्पेंड करोगे वो वर्थ इट रहेगा वेस्ट नहीं होने वाला बिकॉज जो भी आपके क्वेश्चन आप ग्रुप्स में पूछते हैं कि इज इट टफ और वॉट एवर द थिंग इज रिलेटेड टू अलजेब्रा मैं वो क्लियर कर दूंगा यहाँ पे आई विल ट्राई टू क्लियर नॉट आई एम सेइंग कि मैं सारे क्लियर कर दूंगा बट आई विल ट्राई टू क्लियर मोस्ट ऑफ देम सो लेट्स स्टार्ट विद अलजेब्रा पहले ये बताओ हाउ मेनी ऑफ यू फियर टू अलजेब्रा अलजेब्रा का डर किसे किसे है चैट बॉक्स में बोलना यस नो how many of you English paper for the concepts yeah okay sure Gautman but today in this session the agenda is to introduce the algebra what exactly algebra is so I will try to keep it in English
Okay, so that those who are, because I know I will deliver more interactive way in English or mostly Hindi. That's why I would keep it in a English or Hindi. So yeah, Pratishtha, Shivani, Gautman, Anshu, Tejas, okay, everyone. भाई कोई है? Will we get a recorded videos on YouTube also? Yeah, you will get a recorded video of all the sessions, whatever we're going to take the session, except the Q&A part. We have we don't record the Q&A part because maybe there are some questions which we don't want to tell in the recording. Okay, so वो part हम Q&A को हम last में रखते हैं, and those part is for a private. So if you want to watch a recording, you can. So yeah, see, basically you are not clear about algebra. होता क्या है ना, एक्चुअली में आपको algebra का like let's say I was a person, मैंने कभी इतने सारे x y z ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये सारे एक साथ नहीं देखे हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ओके, अगर मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं इतने सारी चीज नहीं देखा, तो मुझे तो देख के डर लगेगा कि यार ये है क्या। बट ट्रस्ट मी, ये देख के डरना नहीं है, वो देख के ही लगना चाहिए कि यार ये तो ईजी है। बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम जो रहते हैं अलजेब्रा के वो थोड़े टफ रहते हैं, लेकिन जब आपके पास एक्स वाई वहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, you can easily solve it by just using a 2 or 3 tricks, जो कि मैं in upcoming session I will going to tell you all the tricks and tips in the coming session by the topic wise. So let's come to the trend, what exactly a trend is. And also guys, you can't ignore algebra. If you are the people who are thinking to go just with the all arithmetic and the other section, and you are going to ignore the algebra, then I think you are like, भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है कैट में। तो डोंट गो विद अ माइंडसेट लाइक यू आर गोइंग टू डू ओनली अरिथमेटिक क्वेश्चन। मे बी देर इज पॉसिबिलिटी द ऑल द अरिथमेटिक क्वेश्चन विल बी वेरी टफ and the all algebra question is very easy, but you don't have knowledge of algebra. So that's why I would recommend you should go with at least basic. You should cover at least basic of all the QA parts and all the LRDI and VRC. You should know the basic, so that if there is some easy question, you can easily tackle those questions. Okay. Pratishtha, sir, I would recommend don't solve that book. Okay, I can't name here, but I would recommend stop solving the book, and will recommend the source of material from where you should practice. But I won't recommend to solve this book. You can solve, but yeah, I won't prefer. That's why it's my choice. So it's your choice. If you want to go with that, you can. But yeah, I bet जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा आपको एज अ होमवर्क एंड ऑल, इफ यू कवर दोज क्वेश्चन, you will cover most of the like a part of algebra as it is. अगर आप mocks दोगे या फिर actual paper भी solve करोगे, you will find the most of the question are similar which I taught you in this series. Okay, so let's come to the past year trends. Why I'm saying you can't ignore this section? The reason behind, the weightage of this section is now increasing year per every year. Like let's come with year 2022. Okay, so let's come with 2022 and 2021. Let's analyze the last 3 years. Then 2023. So last 4 year, not 3 years. So the weightage of this section, if if you go with the weightage part, so let me check the data. In 2020, the question, just a second, guys. Oops. Is my screen visible? Like, can anyone please confirm? Is my screen visible? Okay. It is stuck. My pen is stuck. That's why I thought. Okay, now it is perfect. Okay. So in 2022, you can see there are 9 to 10 question from algebra. In 22 there is 9 to 10 question, depends on the slot. In like a slot 1 there is 9 question. Okay, in slot 2 and slot 3 there was a 10 question. Again in 2021 there are slightly decrease of the number of question. Like here you will find only 7 to 8 question, so little bit of decrease. But
In 2022 you will find again the increasing the number of question like a 7 to 9. In some slot there is 7 question, there in some slot there is 9 question. But there is a big change in the 2023. Like those who have a mindset to solve only a arithmetic question, they find these like a paper is very tough, because this time there are 10 to 11 questions from like algebra. I don't say exactly 10 to 11, maybe there is in some slot there is more than 10, maybe in some slot around 10. Okay, so you can say around 10, but trust me, in this paper people felt like the paper is very tough. Reason behind, they when the paper you start attempting, the first question which like came was algebra, and that looks very easy, but that was really tough. The next question again, that was also from algebra, and in this way there are lots of questions from algebra, and people found it difficult to cope up with the thing like what is happening. I was prepared for arithmetic and other part, but this time there is lots of algebra. And some of my friends also, they like क्या बोलते हैं बर्बाद करके आगे पेपर भाई. मैं तो and I'm very happy that day, because algebra is my strongest part. And to be honest, I just prepared for algebra, even though right now also I just know algebra, arithmetic, numbers, and you can say PNC thoda thoda. Okay, I don't say I'm very good in PNC, because sometimes we'll get a answer correct and sometimes wrong. And the geometry, so I haven't prepared for geometry. I know the basic, some basic, like if there is a question related to very basic question related to geometry, I would solve it. But I don't solve the very tough question, or you can say moderate one. I will solve easy question from geometry and PNC. But these are the section I prepared well. But the most important section part is algebra. I When I started the paper, I simply find where is the algebra questions, and I got a first question algebra, second algebra, third algebra. I was like, wow, maza aa gaya. ठीक है. Then again fourth fifth question from anyone this section, and sixth question again algebra, and I was like, भाई आज तो चांदनी चांदनी है, algebra ही पेपर है क्या पूरा. So होता क्या है ना, if you have a good command in one of the module of the like a quant, अगर आपका good command है arithmetic पे or algebra or geometry, you will find the paper is not very tough, because you know, to clear the sectional cutoff you just need to solve 3 to 4 questions. If you are solving 3 to 4 questions correctly, you can clear the sectional cutoff. So it is not very tough in a CAT to clear a sectional cutoff. That's why I like CAT, because a CAT was a paper where you don't need to do lots of hard work. If you compare with other OMITs, okay, except that, except that, okay. So in these papers, you have to solve lots of questions to score a good percentile or to get a call for the college. You have to score very good marks, good percentile. So as compared to those, I would recommend the CAT was easy. Like it is my choice. I'm saying it is easy. Maybe for some people it is not that easy, but yes, I bet if you analyze it perfectly, you can say yes, CAT is easy as compared to other papers. That's why the people more focus on the CATs, and the benefit is of focusing on CAT. There are lots of colleges, you can say more than 100 colleges, or if we are talking about a good college, so more than 30 to 40, like a 35, let's say 30 colleges who accept a CAT. Okay, not exactly 30, you can say 40 plus. Okay, there are 40 plus colleges who are going to accept the CAT, and those are 40 plus very good colleges. You can go for an MBA from these colleges. So that's why I would say, if you go with a like a, if you know the basic of all the part, you can easily solve 3 to 4 question. It is not a big deal to solve 3 to 4 question. Okay, still if you find a QA section very tough, I recommend just go through this recording of if you are watching a recording of this session, I recommend you to come to live classes and sit with me, solve some questions. Okay, we will take these classes in a, like let's say the टाइम टेबल बना लेते चलो. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. संडे वाज हॉलीडे गाइस.
not exactly a holiday. You have to prepare for, or you have to attempt a mock in this day. So Monday I will take a DILR session. Tuesday we'll take a QA session. QA means algebra only. Okay, similarly, then again DILR and then algebra. The timing was same, 8:30. In some days, maybe possibility I would change the time to 6:30. I will inform you in a group. Okay, you can just join our community and group. Okay, you will find the links in a description or in a chat box also. I will share in a chat box in a meanwhile. Again, then DILR and again algebra. This is what a timetable looks like. And ये तो कर लोगे, ठीक है। अब टॉपिक क्या क्या है, पढ़ाऊंगे क्या, भी तो पूछ लो। तो क्या पढ़ाऊंगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको, किस तरह से पढ़ाऊंगा वो भी बता देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट अ टाइमलाइन, कैसे मैं लेने वाला हूँ आपके सेशंस। एंड यू कैन कम फॉर DLR इफ यू वांट, इट्स योर चॉइस। बट आई वुड रिकमेंड अलजेब्रा, तो आ जाओ यार, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा मतलब you can implement some tips and tricks. At least you should know the tricks which I'm going to use in the questions. You should know so that you can easily solve six, not six, क्या बोल रहा हूँ सुमित, 3 to 4 questions, and you can clear a cutoff by solving algebra question itself. Then you have lots of time to score a more than 95 plus. Okay, even though if you solve 5 to 6 questions seeing the past year trends, you can score easily 90 percentile. Just I means 5 to 6 means 100% correct. Okay, seeing the trend, I'm saying maybe possibility there are possibility it will go for 7 to 8, but as per the like past year trends, I would say 5 to 6 question will fetch you the 90 percentile. Okay, so QA का जिसका डर है भाई, डरो मत। हाँ, ओके शिखर ये भी बता देता हूँ। और VRC का क्या, अंशु VRC, like as I told you, Unnat is going to take a VRC, and actually he is like he not in a condition to take a session. That's why we started CR also, but there are some issue. But by the next week, all जो भी चीज़ है वो streamline हो जाएगा, and you will get a session in a daily basis, or you will get a recording if not possible to take live. Okay, कितनी देर क्लास होगी, आज भी कुछ होगा। शिखर टुडे इज इंट्रोडक्टरी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आज इंट्रोडक्शन है। ओके, एंड या इफ यू आस्क मी कि सेशन टाइमिंग क्या होगा, सो या देखो, इफ यू आर ज्वाइनिंग द सेशन फॉर अलजेब्रा और DLR एनीथिंग, मैं थोड़ा सा स्लो हूँ टू बी ऑनेस्ट, मैं बता देता हूँ पहले। तो द सेशन वुड बी अराउंड, यू कैन से 1.5 hour, ठीक है, और more than 1.5 hour, you can assume it. And because the syllabus is vast, I have to keep the session for more than 1.5 hour. So sit with the preparation of 1.5 hour, you have nothing to do, so that you will get a maximum benefit. Let's come to the topics, what I am going to teach you, in which manner. So these are some, like some क्या सारे ही हो गए, कुछ इसमें छूट जाएंगे तो मैं ऐड कर देता हूँ. These are the important topics. You can say linear and simple equations, you can say special equations. Okay, you have seen this question maybe in a groups also, like some people are asking. Then there is a higher order, like a higher degree and quadratic equations. Then equalities, most important topics. Modulus, most important one. Maximum minima, most important. Logarithm, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इससे, you can expect 1 or 2 questions. APGP, expect 1 or 2 questions. Modulus, 1 or 2 questions. Inequality, 1 or 2. अब ऐसा नहीं कि 1 or 2 आना ही है, पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई एक आए दूसरा ना आए. फंक्शन एंड ग्राफ, फंक्शन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. ओके, ग्राफ यू कैन मतलब भाई उतना तो दिखता नहीं है वैसे ग्राफ, ठीक है, बट फंक्शन का बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. ग्राफ का ठीक है, कर लेंगे बेसिक, अब मैंने लिख दिया तो करेंगे. सो फॉर लीनियर इक्वेशन आई विल टेक 3 sessions I guess, I'm not sure, not 3, linear equation है ना. So this is 2 session, and you can expect here also 2 session. Seeing my speed of the session, you can watch at 1.5x so that you can cover it in one. इसका I will take a 3 to 4 session. Inequality 2 session. Modulus 2 to 3, not 3, 2 session is enough I think. Okay,
and maxima minima 2 sessions. Logarithm 1 session is more than enough. Okay, APGP 4 to 5 sessions. Function and graph assume 2 to 3 sessions. So these are something like not confirmed, but yeah, you can expect 1 or 2 addition of the session in this part. It depends on the portion what left. ठीक है, तो अगर ज़्यादा कुछ बचा है तो विल टेक मोर सेशंस. ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा बीच से ही. ठीक है. Can we get baby IM by scoring 90% overall and sectional? Overall, I won't say. Reason behind, for cap call you need to score like in last year for cap call you need to score around 94 percentile, if I'm not wrong, for general category. And for like OBC and other, depends on your category also. So I would say you can focus on clearing sectional first, because if you have cleared sectional, you will get a call, and overall अपने आप आ जाएगा. Don't worry about overall. Okay, first focus on your sectional part. If you are able to clear the sectional, easy to go. But अगर sectionally clear ना हो तो क्या ही फायदा. Okay, sectional ना हो तो like in my case also, VR section मेरा clear होता नहीं है जल्दी. कभी कभी हो जाता, कभी कभी नहीं. Other two section LRDI, okay, or you can say DILR, I easily score 95 plus. In QA also, I easily go for 95 plus. So depends on the section wise, and you should know, like if it is my weakest area, I have to work more here. Okay, if this is my weakest area, I have to work more here. So you have to choose your weakest area. And how you could find your weakest area? So the simple thing is start attempting mock. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे कोई दिक्कत है इसमें, कुछ लगता है कुछ और, एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा. देयर वाज अ टॉपिक इंडाइसेस एंड सर्ट्स. ओके, आई थिंक आपने कहीं पढ़ा होगा ये. Not that much important, but we will take some session for these also, so that if you find 1 or 2 questions from these, you can easily solve. Not that important, but yeah, it is important for OMET perspective. So yeah, if adding to these like a 10 topic we have, and in this 10 topic your all algebra portion is covered. Nothing left. इससे बाहर कुछ भी नहीं है भाई अलजेब्रा में. कुछ हो तो भाई माफ करना, मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे तो इतना ही पता है. And trust me, if you do all this session religiously and you practice all the question shared by me or in the session which we question we take, I bet you can easily solve at least, let's say अगर पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं algebra के, you can easily solve 6 to 7 question without any hesitation. So it is my bet, मैं गारंटी ले सकता हूँ. प्रतिभा, सी रिकॉर्डिंग टू गेट अ रिकॉर्डिंग. चलो रिकॉर्डिंग का ही बताया था कहाँ कहाँ पे मिल सकती है रिकॉर्डिंग. लेट्स कम टू दोस पार्ट ऑल्सो. पहले वो क्लियर कर देते, कुछ लोग को जाना होगा. ठीक है. सो क्या, यू कैन एनरोल इनटू प्रेपबी. ओके, प्रेपबी में जाओ, prepbee.in पे जाओ. सिंपल, आपको वहाँ पे कैट प्रिपरेशन करके मिलेगा. ठीक है, दिस इज फ्री फॉर ऑल. आप वहाँ पे जाके एनरोल कर लो. वो एज अ कोर्स हमने बना के रखा है, सो दैट यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग इन structured manner. Okay, the first thing you can do this. Otherwise you can go to a PrepBee YouTube channel. Okay, in the YouTube channel also we have created playlist, and those are also in a structured manner. So you can get the recording from two sources. One is from our portal, second one is from our YT channel. So दोनों जगह हम ये करते हैं. एंड अब मैंने ये पेज खोल दिया तो बता दो ये क्या है. सो दिस इज द प्रिपरेशन बडी, लाइक a prep buddy plan offered by PrepBee. Here, if you want to get a personalized mentorship from a mentor who scored a 99 plus percentile and joining FMS, IM, ABC, Black U, all दो जो भी top B school है सबके नाम ले लो. ठीक है. So we have mentors from these B schools. They will going to guide you. You can look for these plans if you want. You are interested to take a guidance and mentorship which is personalized. अब बोलेंगे यहाँ पे तो मिल ही रहा है तो क्यों दे. ठीक है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ लाइव सेशन में आओ, Q&A में अपने डाउट सॉल्व कर लो. दैट्स इट. नो नीड टू पे एनीथिंग टू एनीवन. बट स्टिल इफ यू वांट अ पर्सनल मेंटरशिप कि भाई कोई एक मेंटर रहे मेरे पास,
who is going to guide you throughout the journey, then you can look for this plan. And there are some benefits also, like detailed mock analysis and all. Okay, they will sit with you to analyze your mocks and all. Okay, and then there is a 69 series booklet, then master classes of 69 series. This is specifically for prepared for standard and premium plan users and all. There is something, देख लेना भाई, वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, prepbee.in पे जाओ तो चेक कर लेना। तो ये था भाई, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आप देख सकते हो। चलो तो अब देखते हैं। अब नाउ the very basic question is came from your side, mocks कब देना सिलेबस के बाद? तो नो, इफ यू आर थिंकिंग यू विल गोइंग टू फिनिश द सिलेबस, तो मेरा तो अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। if that was the case, I have to go first and complete his geometry and okay, geometry means I know basic, but I have to work more on it. Okay, and then second one is a PNC, then only I will have to go for a CAD. Then if you are thinking like this, so no, not possible. सिलेबस जिंदगी में भी खत्म नहीं होगा, करते रहोगे सिलेबस, और नया आएगा, कुछ न्यू आएगा, आप वो भी करते रह जाओगे। तो देयर इज नो सिलेबस इन कैट। if are people who are thinking for a syllabus, so to be honest there is no syllabus in CAT. अगर कोई सिलेबस नहीं तो ये ऊपर में क्या दिखाया तूने, यू कैन आस्क मी, ये क्या दिखा दिया भाई आपने फिर, अगर सिलेबस है ही नहीं तो। सो these are the areas where CAT going to test your knowledge, not exactly the syllabus is. That's why I'm saying don't expect exactly the question. Like I have mentioned here, one or two question from inequality and modulus. It doesn't mean you will get a question from inequality, but yes, seeing the past year trends we have created, yes, you can expect one or two question. Okay, so there is no as a syllabus. So if you are the people who are waiting for to complete the syllabus then take a mock, then trust me guys, you are wasting your time. Okay, so don't wait for completion of syllabus, because syllabus complete नहीं होगा। कैट के एक दिन बाद भी बैठोगे ना, यू आर द पीपल लाइक भाई कैट भी हो गया, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे साथ भी सेम केस था। व्हेन आई अटेम्प्टेड माय व्हेन इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2021, सिलेबस में कर रहा था मैं, सेम वे में आई वाज द पीपल डूइंग द सिलेबस। कैट खत्म हो गया, सिलेबस मेरा नहीं हुआ। ठीक है, बट वो तो अच्छा था, मैंने कुछ पे कमांड अच्छा बना लेता, सो दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड अ गुड परसेंटाइल। बट वही है, इफ यू आर द पीपल थिंकिंग कि सिलेबस कंप्लीट कर लूँ देन विल अटेम्प्ट अ मॉक, नो, नॉट पॉसिबल गाइज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। कर तो हो सकता है, कर भी लो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर लाइक। होते हैं यार, देखो कुछ लोग होते हैं जैसे लाइक देयर इज अ पर्सन लाइक उन्नत हु कंप्लीटेड हिज कंप्लीट सिलेबस। ओके, उसके बाद ही लाइक ही टुक अ मॉक इनिशियली आल्सो, बट ही कंप्लीटेड कंप्लीट सिलेबस। तो देयर आर पीपल, तो मैं उनमें से नहीं हूँ, और मैं मुझे पता है 90% जनता मेरे जैसे ही होगी। नॉट 90, चलो हटा दो, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 70% तो होगी। ठीक है, और दैट्स व्हाई आई वुड से दिस 70% कम टू माई क्लासेस। कैसे करते हैं प्रिपरेशन में बताऊंगा मैं अच्छे से। देखो अब सिलेबस तो नहीं होना है तो मॉक कब देना? योर संडे शुड बी अ मॉक डे, नो मैटर वेन यू आर स्टार्टेड प्रिपरेशन। अगर आपने सैटरडे को स्टार्ट किया है तभी भी आपके लिए संडे को मॉक देना ही देना है। अगर आपने आज स्टार्ट किया, कल आपको बैठ के मॉक देना है। लेट्स से आज सैटरडे है एंड यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक, तो कल संडे है, कल मॉक देना है, मतलब देना है, दैट्स इट। दिस इज क्लियर टू ऑल? ओके, आप बोलेंगे मॉक देखिए करना क्या है। सी, व्हेन यू गो टू अटेम्प्ट अ मॉक में यू विल फाइंड 3 सेक्शन, VARC, LRDI एंड QA। VARC सॉल्व कर ही लोगे यार, कुछ नहीं तो एटलीस्ट VA सॉल्व कर लो, 2-4 क्वेश्चन, 2 to 4 क्वेश्चन इन इनिशियल मॉक्स, लाइक आई वुड से इनिशियल 1 to 5 मॉक्स। आपके इनिशियल जो 1 to 5 मॉक्स रहेंगे उसमें आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसा ही होगा। RC यू कैन अटेम्प्ट 1 RC और मे बी 2 RC, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड ऑल। ओके, सो इतना तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे ना। LRD ऑल्सो, LRD जब आप जाओगे, कुछ नहीं तो just try to make one set. At least you should try. I'm not saying you can solve the set, maybe possibility you not able to crack the set, no worries, just try to
correct, make one set correct. That's it. This should be your strategy. In QA, there is a 22 questions. Okay, 22 होते ना, yeah, 22 questions. So 22 question ही है guys. Here just try to solve like 22 का इस question को देख लो. See all the questions one go, and you will definitely find 4 to 5 question which is you are able to solve easily. Just make that 4 to 5 question. That's it. तो बोलना इससे तो मॉक मेरा बर्बाद हो गया. Like some people will think if I am doing this kind of thing then I will waste my 1 mock or 2 mock. तो भाई mocks बहुत से मिलते हैं. If you enroll into any mock, you will definitely get a more than like around 30 mocks you can get. More than 20 mocks तो सब जगह मिल ही रहा है. ठीक है. And after the more than these 20 mocks, you can enroll or you can take a free mocks. Like lots of institute came with a free mocks or all India mocks kind of thing. You can attempt those mocks if you have like shortage of mock. But I don't believe there is a shortage of mock. You can easily solve like attempt all the mocks. So just start attempting mocks. Don't wait for a perfect time. There is no perfect time, and there is nothing at syllabus kind of thing. You can start preparing for this. If you know the basic of VRC, just start taking VRC mocks, or like थोड़ा VRC ऊपर पर देख लो कि होता क्या है. Yeah, अगर you are a people like you don't know what is RC, then I would recommend don't take a mock. First know what is RC exactly. Just know about RC, what exactly RC is, what we can do in RCs, what we can do in VA, and then you can start taking mock. If you don't know about LRDI, you have nothing idea about LRDI, just watch our recording sessions. Okay, we have to call it 8 to 10 sessions. Go through it. You will learn basic idea of LRDI. Quant, ये तो यार कोई भी कर सकता है. There is nothing kind of syllabus. अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, I bet if you are in a mood, I just have to solve 4 to 5 questions. You can easily solve it without knowing or doing any kind of a syllabus. मेरे खुद के फ्रेंड्स मैंने देखा है जो बिना कुछ पढ़े गए और ये सॉल्व करके आए. ओके, इनका मैथ तो कुछ आता नहीं था बिकॉज इन कैट the questions are not exactly a typical like a school question or 10th 12th question. The questions are more likely logical one. So if you use your logic, you can solve quant question easily. मीन LRDI तो पूरा लॉजिक ही है. VRC का तो लॉजिक मैं खुद नहीं समझ पाया, आपको क्या बताऊं मैं, छोड़ो. ठीक है, तो this is my weak section. Weak section in the sense either I can score more than 30 or either I can score around 10. That's why weak. कुछ भी हो सकता है, 50 भी जा सकता है, कभी कोई कुछ हो जाता है गलती से. So this should be your strategy in your initial mocks. Don't wait for सिलेबस कंप्लीट करूंगी तब मैं मॉक दूंगी. ऐसा नहीं होता है. मॉक अभी से स्टार्ट कर दो. ओके, अगेन प्रैक्टिस सोर्स. From where to practice? So let's come to the practice source. I hope the mock part is clear. Do you have any doubt related to mock? Any one of you? Do let me know. क्या हुआ भाई, जिंदा हो या फिर मैं ही जिंदा हूँ अकेला? नो डाउट. ओके, जिंदा बैठा करो, कभी कभी बोर हो जाते यार, जिंदा रहा करो. ओ ओ ओ प्रतीक्षा, अप्रतिष्ठा. I will tell those at the end of the session when we start a Q&A. Not right now. I don't want to name any institute क्योंकि फिर फ्लो में मैं कुछ गलत बोल दिया तो बाद में इंस्टीट्यूट मुझे आके बोलेंगे ये क्या बोला आपने. Okay, and how to analyze, how mock analysis. Oh yeah, good question. Now how to analyze the mock. This is you how to attempt a mock. Now how to analyze a mock. Okay, I think I have to erase this. Give me a second. Analyze कैसे करना है? The good question. Good logical question. Okay, I would say. क्योंकि सबसे पहले मैं यही सोचता था भाई मॉक तो दे दूंगा उसके बाद क्या करना है.
So देखो, once you attempted mock, let's say some people will attempt it either in a morning or afternoon. I would recommend take it in a morning and or afternoon. ठीक है, morning या afternoon में ही दो. और there are 3 timelines you can take a mock on those. The first one is 8:30. 8:30 से दे दो. Second was at 12:30. 12:30 होता ना यार. The third one is 4:30. ठीक है, आई एम नॉट श्योर 4:30 और 4. तो इस टाइम में ही दो स्टार्ट करो अपना मॉक्स. रीजन बिहाइंड कैट का जो है, इसी में से आपको कोई एक मिलेगा, तो आपको हैबिट होंगी इस टाइम में मॉक देने की. लाइक होता क्या है ना, मैं जब मॉक देता था, मैं ज़्यादातर मॉक्स इस टाइम लाइन में या फिर इसमें देता था. बट 2023 में मुझे लाइक 20 छोड़ो, हर जो भी स्लॉट्स मुझे मिलते थे, कुछ स्लॉट्स तो मुझे इसमें ही मिले, मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स. एक बार मुझे इसमें मिल गया और 2023 था, मुझे नींद आ रहा था. ठीक है, बिकॉज आई एम ए नाइट ऑल, तो दिन में तो मैं सोता नहीं हूँ, सॉरी रात में सोता नहीं हूँ, दिन में सोता हूँ. तो भाई मुझे नींद आ रहा था मॉक अटेम्प्ट करने, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने में. So that's why I would recommend to take a mock in each slot so that you are little bit familiar to the timing. Okay. Then once you took a mock, just take a 1 or 2 hour chill. ठीक है, chill बोले तो जाओ जाके कुछ भी जो करना है जो मन में करो, वॉच मूवी और एनीथिंग एल्स जो भी करना है, और रेस्ट, टेक अ रेस्ट. इन शॉर्ट, ओके, टेक रेस्ट. ये टाइम खत्म हो गया. नाउ योर मेन टाइम विल स्टार्ट. Once you're done with the mock, now what you have to do, first was your VRC section, then you have a LRDI section, then you have a QA section. VRC, solve all the question again. Similar for the all, it's go for all. Okay, तो अब मैं बोलूँगा VRC solve all क्यों बोल रहा हूँ मैं. देखो, at least solve all VA question and see what is incorrect, like क्यों गलत क्यों हुआ and why. ठीक है, बाकी VRC वाले सर ने अच्छे से समझाया कि कैसे इसको एनालाइज करना VRC सेक्शन को, वो एक बार उनका देख लेना. बट मैं वही ओवरव्यू बता रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, when you solve RC again, just see कि आपने पहले जो किया था, what you did in the first attempt or in your actual mock, what is your logic, what is your reasoning, is it a correct or you just make it a fluke and it was got correct or maybe it was got incorrect. Okay, so see the logic, and once you got the logic and see the actual answer key, and they have also mentioned their answer key why it is correct or why not, just check is your logic matching with the people who have make this question. Okay, तो वो देखो, अगर आपका लग रहा है कि yes, my logic was similar to the person who have created the question, it is good to go, you are on a right path. Maybe sometime it was like in a case, in my case also, I found the ऑथर और क्वेश्चन मेकर वाज इनकरेक्ट. मुझे लगता है कि भाई मैं तो सही कर रहा हूँ, ये तो इनकरेक्ट किया इसने. तो डोंट मेक दिस काइंड ऑफ ईगो. ऐसा अगर ईगो में अगर आ गए, देयर आर सम क्वेश्चन, हो सकता है कभी 2-3 क्वेश्चन में हो जाए ऐसा कुछ, आप सही हो, ऑथर गलत हो, या फिर जो क्वेश्चन मेकर है वो गलत हो, क्वेश्चन सेटर. तो बट यार डोंट लाइक ऐसा ईगो मत क्रिएट कर लेना अपने अंदर कि भाई मैं ही करेक्ट हूँ, अपनी भगवाने वाला सीन नहीं करना है वहाँ पे. So that's why solve all the RCs. It will took you around 2 hour maybe, because this time you are analyzing. You are not going to solve in a 40 minutes. Okay, you are analyzing the questions. You are solving the question. First solve the question. Let's say RC1, you solved RC1. You solved RC1 and now you just check the answers. Yeah, it is correct or not. And then see the reasoning. Once you're done with this part, solve RC2. Okay, this is what you can analyze VRC. Otherwise, you can solve the complete paper again VRC and then go for analysis. But मुझे ये सही नहीं लगता है. रीजन बिहाइंड, अगर मैंने ये आरसी अभी सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि मैं भाई मेरे पास इतना ही दिमाग है, मतलब मेरे माइंड की कैपेसिटी इतनी है कि मैं 10 मिनट के लिए याद रख सकता हूँ कि मैंने क्या लॉजिक लगाया. दैट्स व्हाई आई वुड प्रेफर दिस वे. ओके, एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आप भी ऐसे ही हो कुछ, तो इस तरह से कर सकते हो. द मैटर, ओनली थिंग इज मैटर, you know कि what you are analyzing, what is the reasoning behind it.
So you are using your reasoning that is correct or not. This is what you can do for VRC. Then LRDI, कुछ नहीं करना है भाई, चारों सेट बनाना है फिर से, 4 सेट. नाउ इफ यू वांट टू नो कि इसको और डिटेल में कैसे करना है, LRDI के मैंने फर्स्ट सेशन में बताया कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, अच्छे से मैंने बताया था, वो भी देख सकते हो. बट यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. यू कैन इधर सॉल्व 2 सेट टुडे एंड 2 नेक्स्ट सेट नेक्स्ट डे. एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यू कैन वॉच माई रिकॉर्डिंग फॉर LRDI, समझ जाए क्यों बोल रहा हूँ. कुछ नहीं है, 2 मिनट का सीन है वो, 5 मिनट का मैंने अच्छे से समझाया वहाँ पे. ठीक है. एंड सिमिलरली नाउ व्हेन इट कम टू QA, this is the most important part because we are talking about QA this time. So you have 22 questions. Now if you are a people like me, I would distribute all the question in a domain कि चलो ये अरिथमेटिक्स है, ये अलजेब्रा से, ये ज्योमेट्री से, बाकी सबको मैंने अदर्स में डाल दिया. ये अदर्स, ये मुझे आता पता नहीं है कुछ, बट शायद एक दो बन जाए इसमें से. नाउ व्हाट आई कैन डू, because I know this is my strong area, I would solve all the question from algebra. Why algebra? All the question from algebra. Reason behind, there might be some questions which are difficult one, and if I'm able to crack those, I will feel okay. Yeah, that's great. At least I am able to solve these questions. Then I will come for arithmetic because it is something I know the basic, and it is I have a good command, not very good, but yeah, I have good command. Geometry, मैं touch भी नहीं करूँगा अभी तो. I will go for others. This is my strategy, guys. Okay, you can like agree or disagree with this. बिकॉज मुझे ज्योमेट्री अच्छा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको पहले नहीं छूता हूँ. आई गो फॉर अदर्स एंड आई विल चेक हाउ मेनी क्वेश्चन आई एम एबल टू सॉल्व फ्रॉम दिस. इफ आई एम एबल टू सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चन, ओके, देन सॉल्व ज्योमेट्री क्वेश्चन. नाउ आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज थिंग, you will know like from 22 question you are able to solve like 12 to 15 question easily from all this part, considering all this part. Then now see where is the knowledge gap, why you are not able to solve complete 22 question. Now see the reasoning and the solution for the same, and again try once. Okay, once you seen the solution, again try once. Okay, and that's it, you are done with your like what you say analysis. इतना ही करना है, इससे तो कुछ नहीं करना है. This is what you can analyze the mock. ठीक है. मतलब मुझे तो लगता है यही है. अब एक और चीज कर सकते हो फॉर रिवीजन पर्पस, like I would highly recommend you, when you analyze the mock, just make like a sheet, doc sheet or something. Not doc sheet, yeah, doc you can, क्या बोलते, गूगल शीट, नॉट डॉक शीट, गूगल शीट. क्रिएट अ गूगल शीट और एक्सेल, जो भी है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो बनाओ. वहाँ पे कुछ सेट ऐसे होंगे जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, एंड यू कैन सी कि द सेट वाज वेरी इजी बट यू आर अनएबल टू डू. जस्ट और इफ यू वांट टू सॉल्व इट दिस सेट वंस अगेन, तो आप यहाँ पे अपना जो भी मॉक दिया उसका मॉक नंबर एंड सेट लिख सकते हो कि ये वाला सेट नंबर दिस. Similarly for QA question, if you have some QA question, you can put down your QA question here. Why I am saying this? Because before CAT, like I would recommend एक महीने पहले तो भाई रिवीजन चालू कर दो. ठीक है, अगर आप आज से पढ़ो तो इजीली यू कैन, मेरे से मतलब अगर आप गाइडेंस लेते रहोगे इस सेशंस के जरिए तो आप आराम से, मैं बता दूंगा कब क्या करना है. तो मैं बताऊंगा आपको टाइम देन, और यू कैन सिंपली से नवंबर मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है. नाउ दैट टाइम क्या करना है, आपको ये शीट खोलना है और जाके देखना है कि यार कौन से क्वेश्चन में फंसा था, क्यों फंसी थी. ठीक है, एंड आपको वो चीज़ वापस सॉल्व करना है. दैट्स इट. दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज LRDI एंड QA. एंड बेसिक्स जो है वो तो आप वैसे ही रिवाइज कर ही लोगे, उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी. फॉर अलजेब्रा आई बेट इफ यू गो थ्रू माई सेशंस, one go is enough to know all the thing, or max to max 2 go. But I bet you don't need to go through all the session at the end of the CAT or at the time of the CAT, before a CAT. like नवंबर मंथ में आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं करवा दूंगा. एंड ट्रिक्स मैं इतनी सिखा दूंगा कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे कुछ क्वेश्चन तो. So this is what the today's agenda is, and I tried to cover all the points. In this session we have discussed about everything about algebra, like why it is important,
you can't left okay, algebra from your syllabus. Like there are some people who are thinking or might think to just skip the algebra. So it is not possible. Without algebra, you can't do well. There is possibility in this year you will get a 15 plus question. What if you will get a 15 plus question from algebra? कुछ भी हो सकता है भाई. डरा नहीं रहा हूँ, but yeah, just बता रहा हूँ. Then we have seen the important topics what we are going to cover in the model. You can just take a screenshot and if you watching a recording just see the topic. इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं अलजेब्रा में, इससे बाहर कहीं जाओगे भी नहीं. We'll cover it in a basic to advanced way. ऐसे नहीं कि randomly मैं कुछ भी आके पढ़ा दूंगा. जैसा मैंने टॉपिक बताया मैं उस हिसाब से ही पढ़ा होगा. Even though if you have seen my LRDI classes, I'm going with topic wise and going with all topic. And देखो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा स्लो करूँगा, ठीक है, वो मेरी हैबिट है, बट मैं पूरा करवाऊंगा. And my focus should be to build your basic and the command on the section. You can easily solve any question. My focus should be on your basic and command on the section. That's it. बाकी क्वेश्चन कैसे करना हो आप खुद सीख जाओगे मेरे साथ. Then we covered a CAT syllabus. Not syllabus. I have mentioned that there is no syllabus. Okay. बता देना अपने दोस्तों को भी कोई syllabus नहीं भाई, तू पागल है. Then we have covered when to start a mock and how to analyze the mock. Okay. This is what we have covered. Apart from this, if you have something not a generic question but some personal questions, we will take it in a Q&A. Right now we are going to start Q&A, and because it is our policy we don't take a recording of Q&A, so no recording for Q&A. तो Q&A में participate करना है, just join a live classes, you can participate in Q&A. So that's it for today. If you are watching a recording, okay, you can just go to a PrepBee.in and check our offerings. Maybe might be it will going to helpful. Yeah, one more thing I forgot to add. There are some surprise coming in this week, so stay tuned with the PrepBee.in or in our channels. If you are watching recording, भैया डिस्क्रिप्शन में देख लो, लिंक होगा ज्वाइन आवर चैनल, वहाँ पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी है पूछ सकते हो. और अगर आपके ऐसे पीडीएफ है तो पीडीएफ में आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे. Okay guys, that's it for today, and we are going to start our Q&A part. So I wish you all the very best. Please join us live. Jai Siya Ram.